Hello everyone. Very good evening. Hello everyone. I'm Sudipta Panda welcoming you all to Vedang classes powered by Vedang Institute of Technology. So tell me, how are you everyone? केमिति सब अच्छा? Hope all are going good, doing well. So जल्दी जल्दी कनेक्ट हे जा. Before that मते कहि दियो ऑडियो वीडियो सब क्लियर अछि तो. And तम समस्तिंकु लाइक पवित्र स्नान पूर्णिमा अवसर रे बहुत सारा शुभेच्छा एवं शुभकामना. प्रभु जगन्नाथ आपण समस्त को भलरे रखंतु आपणकर सब एग्जाम को एटलीस्ट फास्ट टायर तो कंप्लीट करे दियंतु सो दैट आपण जानि परिबे कि आपणकर कैलिबरी कोन. ओके ओके चलो स्टार्ट करिवा क्लास. प्रियंका, अमित, मौसुमी, जयराम, विरजिनी समस्त को वेरी वेरी आसा. तो फर्स्ट थिंग आपण माने जानि छंती ओपीएससी एसओ पाई जदि आपण माने कोनोसी बैच सर्च रे अछंती ताहाले अनुशासन बैच इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू ऑल जोठी आपण को थ्योरी तो पढ़ा जाउची ता सहित एमसीक्यू सहित आपणकर माने जो थ्योरी पढ़ा जाउची ता पर केमती एमसीक्यूज आसीबो ताकू भी हमें कवर अप करोछु एंड यार प्राइस ओनली 1999 अछि 100% मनी बैक गारंटी. एठी आपण माने मो कोड SPG10 यूज करि परिबे टू गेट अ एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट. ओके after that sahakari batch which is purely for the junior assistant. Those students are preparing for junior assistant, they can also enroll this batch 1199. Out of that आपण माने 3999 देकी batch enroll करि परिबे महापैक आपण माने नै परिबे एंड ए सबुथरे महापैक रे भी आपण माने मो कोड SPG10 यूज करि परिबे. ओनली SPG10 जोथरे आपण माने 10% रो एक्स्ट्रा डिस्काउंट गोटे अवेल करि परिबे. एंड अग्निपथ 399 जेतु प्राइस पूरा नॉमिनल अछि 399 रे आपन को 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट प्रोवाइड करा जाउची. ता सहित मन रखंतु आपन को MCQs एवरी चैप्टर रो टॉप 300 MCQs प्रोवाइड करा जाउची. नॉट ओनली के MCQs पठा होची दैट मींस आपन को प्रॉपर एक्सप्लेनेशन सहित क्लासेस प्रोवाइड करा जाउची दैट टू लाइव. ओके वेरी गुड इवनिंग समस्त को. पवित्र स्नान पूर्णिमा रे तो आपण नॉनवेज खाइदेले. केबे खाइली? सोमवार तो मु खाएनी एमती रे. गुरुवार रे खाइदिए. आसो फर्स्ट क्वेश्चन आपण मानक पई मते कहतो टियर गैस इज आसो साइंस क्वेश्चन नो फास्ट आरंभ होई जाईची ता माने आज रो सेशन ता भलो जीवा को जाउची. हां आसो आंसर दियंतु. गायत्री आई एम एब्सोल्युटली फाइन, थैंक यू फॉर आस्किंग. मैम आपण को न्यू ड्रेस कई आज कोन के आज कोन मोर बर्थडे की न्यू ड्रेस. अच्छा स्नान पूर्णिमा रे न्यू ड्रेस पिनंदी अच्छी जे बट लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करिया को पड़िबो रूल्स वेदांग क्लासेस रो. जेते बेले ऊपर ऑर्डर आसीबो हमें सिविल ड्रेस रे क्लास करि परिबो देन ओनली यू कैन डू दैट एल्स वी हैव टू वेयर द यूनिफॉर्म. हो आसो टियर गैस आपन को कोन कहूची द टियर गैस इज अ क्लोरोपिक्रीन कहूची. कोन कहूची डी सी तुमको राइट रे खाला देखि काले सी हेथिबो मु भूल कहतबी हो ना. हासा सो कोन कहूची ये आपनकर कहूची दैट इज द क्लोरोपिक्रीन बोली हमें ता कहूची. आपण माने कहतले सी दैट इज द नाइट्रस ऑक्साइड. एटा आपन को लाफिंग गैस तो बिल्कुल कहिनी. लाफिंग गैस कथा तो आपन को बिल्कुल कहिनी. ताहले आपण माने केंती रिलेट करेले बच्चास एंड बच्चीज कोन हेछि त मानकर आज लाफिंग गैस को कोन रिलेट करेलनी हस कथाटा कोन ताहले मते के कहि दियो. पहले बेल में विकेट ओवर आसा. तो मिथेन कहले हमें रिलेट करि परिबा कोन ना हमें जानि छै दिस इज अ अल्केन गैस एंड हमें ताको रिलेट करि परिबा ग्रीन हाउस गैसेस सहित. ओके इथेन हेले आपको हमें कहबे दिस इज अ कलरलेस, दिस इज नो कलरलेस, ऑर्डरलेस. तो एई भले गैस आपनकर कोन होची ना इथेन रहूची. ओके सो राइट आंसर आपन क्लोरोपिक्रीन देखि दियंतु. क्लोरोपिक्रीन कोन कहूची ना इज अ केमिकल कंपाउंड दैट एक्ट एज अ पावरफुल टीयर गैस causing intense irritation to the eyes when it inhaled. And ethane and methane, these are the simple hydrocarbons and not considered to the tear gas.
Nitrous oxide, also known as the laughing gas. This is a different type of gas with आपन anesthetic properties अच्छी. The key point when referring to the tear gas, the correct answer is usually कौन रहिबो chlorofecrin. मन रहिबो tear gas कहिले chlorofecrin को relate करेबे, laughing gas कहिले nitrous oxide. Clear? चलो next मते कहंतु. Which of the following is considered to be the best cholesterol? अरे बाप रे कहिलो best cholesterol कहिले हमें कहा को बुझुछे. Quick answer. हाँ राका कौन हैला heartbreak. अरे राका गुड़िए ग्लूकोज दियो रे तार आज दीदी थरा हार्टब्रेक हेजी. फर्स्ट जन को प्रपोज कला से रिजेक्ट कला पुणी आउ जन को प्रपोज कला से कहला मु इवनिंग रे कहिबी सुदीप्ता मैडम को क्लास रे ही कहिबी मोर देखला को से आज क्लास को आसीबी सेथि लागि राका पूरा दुख रे मर्माहत ता गुड़िए ग्लूकोज दियो टिके. अच्छा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड टू बी द बेस्ट कोलेस्ट्रॉल. कहा को हमें कंसीडर करछे बेस्ट कोलेस्ट्रॉल. सीमा प्रणाम. अच्छा सो कोन होची एचसीएल को हमें करिबा की कोन होची देखिली बाराका आहो केमती देखिबी देखिली बा. आसा HCl को हमें रिलेट करोचे कोन कहूचे ना HCl एंड व्हाट डू यू मीन बाय द HCl. छा HCl कहले कोन बुझुचो. हां अच्छा DDL कहले कोन बुझुचो टे कहलो. ना DDL कहले कोन बुझुचो रे. ओह एता सुंदर हेलानी बट तमे जानि परबे DDL कहले कोन बुझुचो. ओय DDL कहले कोन बुझुचो. हाँ कि चंद्रमुखी से ही सांगे सांगे सिग्नल धरुची. ताले HCl ला फुल फॉर्म कोन कहला टिके. HCl ला फुल फॉर्म कोन. HCl ला फुल फॉर्म होची आपणकर हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन. कोन कहूची हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन. ओके एंड दिस इज द बेस्ट कोलेस्ट्रॉल बोली हमें ताकू जानिछे. केमिति जानिछे जस्ट हैव अ लुक हियर. पहिला हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल इज considered the good cholesterol because it helps remove other forms of cholesterol from the bloodstream. High levels of HDL cholesterol can lower your risk of heart attack, heart stroke thai. And how HDL works? HDL absorbs करे cholesterol को in the blood, carries it back to the liver flushes it from the body, and factors that can affect the HDL levels, that are the genetic, lifestyle habits, diabetes, smoking. जो माने smoking करछन्ती kindly quit it immediately after this class. Then being overweight, जो माने overweight अछन्ती चलो कल वर्क रे जाओ नॉलेज जिम जाओ, and big sedentary obviously हैला. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मते कोन द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ ए स्टेट कोन कहूची को विश्व बाबू प्रणाम. मते कहंतु यार आंसर कोन हबो. द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ ए स्टेट शैल बी वेस्टेड कोन शैल बी वेस्टेड इन whom as per इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. कहा ऊपर कथा कोआ जायछि कहंतु एटे पचारि छि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट आपन को पचारा जायछि. कहा को हम रिलेट कर परिबा. समस्त एठी आंसर दोथुवे कोन जल्दी समस्त कोन आंसर दोसंती. प्रियव्रत देले ऑप्शन सी. प्रियव्रत देले सी स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को आपनकर एग्जीक्यूट करंती. स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आपनकर करंती ताले गवर्नर कोन करंती. ताले गवर्नर कोन करंती मते टिके कहि देला देखि आंसर. गवर्नर कोन करंती. गवर्नर आपनकर कोन ना कॉन्स्टिट्यूशनल हमें कहूचे एंड द नॉमिनल हेड आपनकर रहिबे एठी कॉन्स्टिट्यूशनल हेड पचरछि तो हां. The executive power of the state shall be vested in whom as per the Indian constitution. Executive power आपनकर implement किए करेबे execution करेबे chief minister. किंतु according to article 154 of the Indian constitution, the executive power of state is formally vested in the governor. governor को पाखरे रहइबो सी आपनकर कोन ना distribute करिवे different ministers मानु को through chief minister आपनकर रहिबे. chief minister will be the real executive authority and the elected जेति के आपनकर मेंबर्स थिबे इलेक्टेड आपनकर मेंबर्स मानकर हेड हमें कहि परिबा कि स्टेट गवर्नमेंट जहां भी एक्सरसाइज प्रोवाइड करिवे प्रैक्टिकल लेवल रे जाई कि प्रैक्टिकल लेवल रे जाई कि ताको एडमिनिस्टर करिवे ताको इंप्लीमेंट करिवे. किंतु जेते बेले पछारिबो एग्जीक्यूटिव पावर कहा पाखरे अछि ना अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 154 गवर्नर को पाखरे ही अछि. क्लियर. हां President 53, yes, Article 53. Next, mother कहूँ the number of person who remained unemployed for a major part of the year is called.
जेमिति कि 2025 भी गला 2026 भी जीवा जीवा होउची किंतु तमे माने पर्यंत गोटे भी जॉब क्रैक कल नाही कारण सीरियस ना हो तुम माने ओके एमिति तुम मानकर बहुत रज भी गला हैला एबे रथ यात्रा भी जीवो तापर पुणी दुर्गा पूजा टाइम आसी जीवो किंतु तुम माने सीरियस हबो नाही तो एई केस रे तुम माने जदे लेफ्ट आउट रही जीवो पचारिछि द नंबर ऑफ पर्सन हु रिमेन्ड अनएम्प्लॉयड फॉर ए मेजर पार्ट ऑफ द ईयर मेजरली माने टोटल जदि लास्ट को आपण माने जॉब पाइले किंतु मेजर पार्ट गोटे ईयर आपण माने कोन अनएम्प्लॉयड हेकि रहिले सेठी आपण को जीवो यूजुअल स्टेटस एज द अनएम्प्लॉयमेंट रो टैग आपण माने पाइले यूजुअल स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट डेली स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट ताले को माने को जीवो डेली स्टेटस को माने ना हाईली प्रिसाइज करिवे कोन ना द मेट्रिक ट्रैकिंग एम्प्लॉयमेंट लाइक आपण को कोन ना डे 0 टू माने डे टू डे बेसिस डे 0 रु डे 0 पर्यंत आपण को जदि टोटल होल ईयर आपण को अनएम्प्लॉयड रहिबे से मानु कहजो डेली स्टेटस जदि लास्ट ईयर को आपण नवंबर डिसेंबर रे क्रैक करि गले ताहाले आपण को यूजुअल स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट कैटेगरी रे कैटेगराइज करा जिवो ठीक अछि चलो नेक्स्ट मते कोन सो यूजुअल स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट मेजर्स यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस एस्टिमेट द नंबर ऑफ पर्सन्स हु रिमेन अनएम्प्लॉयमेंट फॉर ए मेजर पार्ट ऑफ द ईयर टिपिकली 183 डेज रो अधिक हेले से मानु को कहजिवो यूजुअल क्लियर चलो नेक्स्ट मते कोन वेयर इज द कंट्रीज फास्ट गैंगेटिक डॉल्फिन रिसर्च सेंटर इंस्टीट्यूट लोकेटेड कोठी अछि आपनकर कहले मु कोर्स करि परिबी माने कोन तमे कहउछ माथ तो हार्टली चाहू जे तुम माने केमिति जॉब क्रैक करिवो मु काहे केतेरा माने राति दिन तुम मानु को YouTube रे आसी काहे चिल्लोछि पैसा मिलुछि मते YouTube रे चिल्लेबा पई को भाबो टिके भाबो को सो राइट आंसर कोन हो इंडियास फास्ट गैंगेटिक डॉल्फिन रिसर्च सेंटर लोकेटेड कोठी आपनकर अछि कोठी अछि मुंबई कोलकाता दिल्ली और पटना वेरी गुड राइट आंसर जो माने दिचंदी की देछन श्री हमर देथिबो श्री आज क्लास रे नाही श्री कोडे होला जी सीमा भूत सभापति हाँ हाँ भूत सभापति आस एमते ना रे ना ही तो माने कर नबी आस द कैपिटल सिटी ऑफ बिहार आपण माने जानि संती गंगा रिवर कूल रे आपनकर अछि आइडियल होस्ट साइट फॉर द नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर नेक्स्ट चलंतु सो द कंट्रीज फर्स्ट गैंगेटिक डॉल्फिन सेंटर आपनकर एनडीआरसी मार्च 2024 रे एस्टैब्लिश हेची कोठी ना पाटना रे मन रहिबो भूलभाल करिबो नाही चलंतु नेक्स्ट मते कोंतु द पेनिनसुला रिवर्स व्हिच डू नॉट जॉइन द अरेबियन सी आर को पेनिनसुला रिवर आपनकर अरेबियन सी को जॉइन करी नाही आपन को पचारछि ता माने जो माने बे ऑफ बंगाल सते जाई कि मिसी संती से माने निहाती करि नथिबे ह ना नै मते कोंतु एठी पचारछि डू जॉइन द पेनिनसुला रिवर व्हिच अच्छा डू नॉट जॉइन द अरेबियन सी डू नॉट पचारछि एठी आपन मानको नर्मदा ताप्ती आपन मानकर कोठी ना अरेबियन सी कारण वेस्ट फ्लोइंग हे गेले गोदावरी एंड कृष्णा को हमें कोन कंसीडर करिबा ना एमाने तो जाई आपन एठी पुनी तापी अछि तापी एठी पुनी नर्मदा अछि ता माने एमाने सबु आपनकर कोठी वेस्ट फ्लोइंग रिवर ताप्ती अछि माने हमें जोठी नर्मदा ताप्ती रहिबा से मानु हमें वेस्ट रे फ्लोइंग कर देबा गोदावरी आपनकर कृष्णा एमानु हमें रिलेट करेबा का सहित ना बे ऑफ बंगाल सहित रिलेट करिए देबा क्लियर क्लियर चलंतु तो आपनकर रहिला मेजर गोदावरी इट इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर ऑफ द फ्लो ईस्ट एंड इनटू द बे ऑफ बंगाल जाई के ड्रेन हुए दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग रिवर पेनिनसुलर रिवर जे के आपनकर पुनी बे ऑफ बंगाल ही एमटी हुए नेक्स्ट मते कोन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट टाइप इज प्राइमरीली फाउंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया कोठी आपनकर नॉर्थ ईस्टर्न साइड रे आपनकर प्रेजेंट अछि क्विकली को राका तमे चंद्रमुखी की खोजी खोजी आज क्लास को आछो चंद्रमुखी को प्रपोज करथिला सी मना करछि मते बा कि नाइ मैम मु ऑलरेडी सेटल बोली मैम सिंगल नाही प्लीज क्लास रे कहिबे मते के प्रपोज करिवेनी आसो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट टाइप्स इज प्राइमरीली फाउंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया कोन हबो जल्दी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट कथा पचारि छी ता माने आपण माने कोठी के जिबे डेसिडियस फॉरेस्ट को भूल से भाबी नाही डेसिडियस फॉरेस्ट आपण कर कोन जोडे कि ईयर अराउंड हमें कहि परिबा मॉडरेट रेनफॉल होउची मॉडरेट रेनफॉल हबो ताकू हमें कहि परिबा दैट इज द डेसिडियस तो एठी आपनकर कोन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को हमें कंसीडर करि परिबा कि नॉर्थ ईस्टर्न साइड कोची माने हमें का कोना ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को रिलेट करै परिबा हो ना नहीं कोन हेछि आज के जानी एते कम पिला कोन पई आसा सो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को हमें कहिबा दिस इज अ डेंस एंड मल्टी लेयर्ड आपनकर कोन जंगल कहि परिबा जथिरा आपनकर बायोम डिफरेंट टाइप रो थांती एंड दे आर थ्राइविंग इन अ हाई टेंपरेचर ओके नेक्स्ट चलो so tropical evergreen forests are primarily found in the northeastern region
मते कोन नॉर्थ ईस्टर्न कहले आपनकर आसाम अरुणाचल प्रदेश मेघालय नागालैंड एउडा को कंसीडर करियो जोथिरे आपनकर एक्सीडिंग केते रहइबो रेनफॉल ना 200 सेंटीमीटर रु अधिक रहउची ओके नेक्स्ट चलंतु मते कोन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्लोबल बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया या भितर कोटा को आपनकर ग्लोबल बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट बोली हमें कंसीडर करूछे टोटल स्टार्टिंग रो देखो देखो आ किछ ऊपर तळु को जीवा इच्छा होची कि त मानकर जल्दी कहतु अच्छी कि वर्ल्ड रो रिनोन्ड माउंटेन रेंज जे कि स्ट्रेच करछि इंडिया रो वेस्टर्न कोस्ट को टोटल आपनकर ह नाही आपनकर हाई लेवल रो एंडेमिक प्लांट हैला माने फ्लोरा हैला फौना हैला स्पीसीज मान को नेकी हमें वेस्टर्न घाट सहित ही रिलेट करेबा ना वेस्टर्न घाट इज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द 36 ग्लोबल बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट टू क्वालिफाई एज a hotspot a region must meet two strict criteria and it must contain at least 1500 species तार रहिबा दरकार माने vascular plant as endemics माने पर्टिकुलरली सेही जगह एंडेमिक माने कोन जोटा कि पर्टिकुलरली सेही गोटे एरिया रे देखिया को मिलथु अलगा कोडी न त 1500 भले स्पीसीज आपनकर पर्टिकुलर हेबा दरकार सेही एरिया रे देन जाई कि से माने कोन आपनकर ना बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट रे कंसीडर हेबे आउ कोन होची ना एंड हैव लॉस्ट एट लीस्ट 70% ऑफ इट्स ओरिजिनल हैबिटेट तो एटलीस्ट आपनकर 70% रो हैबिटेट निजर ओरिजिनल हैबिटेट लॉस भी करिथिबे द वेस्टर्न घाट आल्सो नोन एज द साहेद्री हिल बोली मन रखिथा क्लियर एंड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट रे भी मध्ये जाईची कंसीडर्ड वन ऑफ द वर्ल्ड 8 हॉटेस्ट आपनकर हॉटस्पॉट मध्यरु ये होची गोटे क्लियर नेक्स्ट चलंदु मते कोंतु द पैडी फील्ड्स ऑफ इंडिया आर लोकेटेड इन द एरियाज ऑफ एनुअल रेनफॉल केते पैडी फील्ड आपन को कहूची आपन माने कोन लगौचंदी धान लगौचंदी गहम लगौचंदी किछि भी कहबे बट एतले पैडी फील्ड कथा कहूची हमें काहा को कंसीडर करबा ना कंसीडर करबा 100 सेंटीमीटर रु अधिक जदी रेनफॉल आपन कर होउतबो दैट इज द स्टैंडर्ड जियोग्राफिकल बेंचमार्क हमें कहि परिबा रिक्वायरमेंट हेई थाए फॉर सक्सेसफुल राइस और माने राइस कल्टीवेशन पैडी मींस इटसेल्फ आपन को राइसिंग कहिबा राइस कल्टीवेशन जे कि डिमांड करे हाई मॉइस्चर लेवल एंड वाटर रिटेनिंग क्ले कैपेसिटी रहिबा दरकार से माटी रे वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी रहिबा दरकार एंड द वेदर शुड बी द मॉइस्चर कंटेंट्स ओके नेक्स्ट चलो सो राइट आंसर आपन करे 100 सेंटीमीटर एज ऑफ नाउ मिनिमम next which dynasty supported British maximum during the 1857 freedom movement आसो राइट आंसर कोन हबो छ जल्दी कोन हबो राइट आंसर which dynasty supported the British the most during the revolt of 1857 कोन हबो राइट आंसर क्विकली कहि दियो that is ग्वालियर सिंडिया ऑफ ग्वालियर को सहित हम रिलेट करै परिबा दैट मींस आपनकर 1857 रिवोल्ट कथा मु एठी कहूची दैट वाज अ पावरफुल कोन मराठा प्रिंसली डायनेस्टी थिला जे कि आपनकर कोन रूल करथिला तांकर रूलर्स माने तांकर मिनिस्टर्स माने एक्टिवली रिमेन कोड थिले ना लॉयल थिले एंड प्रोटेक्ट करूथिले आपनकर ब्रिटिश रा अगेंस्ट तांकर टेरिटरी को 1857 रिवोल्ट कथा आपण माने मने पकांतु क्लियर ए जो होकल्स आपण सॉरी होलकर्स एंड ऑफ इंडोर कहूची आपको हम रिलेट करि परिबा कोन ये भी मराठा थिले बट दे आर माने रूलर्स एते आपनकर स्ट्रांग नथिले okay so during the 1857 freedom movement the Scindias of Gwalior provided the most significant support to the British while the Gwalior troops आपनकर कोन करले ना mutinied and joined the rebel forces led by Rani Lakshmibai and Tantia Tope clear next मते कहि दियंतु which of the following pairs is not correctly matched यांका भितरु आपनकर को पेयर टा करेक्टली मैच हेई नाही गोटा को आपन माने चूज कर दियंतु वेल आपनकर कोन ठीक है जीवो फर्स्ट कहछि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन सहित राजा राममोहन राय को काई रिलेट करूछि एठी देखिया कोन अछि ना पुन्ना सार्वजनिक सभा अच्छा पुन्ना सार्वजनिक सभा गणेश वासुदेव जोशी ये आपनकर ठीक अछंदी पुन्ना सार्वजनिक सभा आपनकर फाउंडेड की करथिले ना गणेश वासुदेव जोशी 1870 मसिया रे फाउंड करथिले ये आपनकर ठीक अछि द इंडियन लीग आपनकर शिशिर कुमार घोष ये भी आपनकर ठीक अछि इंडियन लीग आपनकर 1875 मसिया रे केबे हेतिले ये 1870 रे ये आपनकर 1875 रे आपनकर फाउंड हेतिला ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस आपनकर के सत्येंद्रनाथ बानर्जी तामे जानि छे केबे हेतिला ना ये आपनकर आउट के लेटर हेतिला माने 1883 रे आपनकर पाखा पाखी रे टिके चेक कर देला गाइस 1883 और 7 ओके तो रहिला आपनकर एटा टिके लागुची तो देखि हां ईस्ट इंडिया एसोसिएशन वाज फाउंडेड बाय दादा भाई नारोजी इन 1866 in London not by the Raja Rammohn Roy clear the Punna Swaraj ए सब आपनकर पूरा ठीक अछि हां ये आपनकर 1883 रे ये आपनकर ठीक अछि 1883 रे ओके क्लियर चला नेक्स्ट
मते कहि दियंतु अंडर व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस बी स्पेसिफिकली रेस्ट्रिक्टेड कोठ आपनकर स्पेसिफिकली रेस्ट्रिक्टेड हेइथि मते कहलो अंडर व्हिच आर्टिकल आपनकर हेइथो आर्टिकल 19 आपनकर कोन करूची ना गारंटी करूची 6 बेसिक डेमोक्रेटिक फ्रीडम्स ऑफ ऑर्डिनरी सिटीजन इंक्लूडिंग आपनकर कोन स्पीच हैला आपनकर असेंबली हैला आपनकर मूवमेंट हैला या फिर आपनकर डिफरेंट सब्जेक्ट्स जनरल टू द आपनकर कोन जे कोन से रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस रहिला ताकू रिलेट करी के आर्टिकल 19 कहूची हियर एठी आपनको पचारछि fundamental rights of the members of the armed forces be specially restricted under article 33 केते हबो ना under article 33 आपनकर एटाको restriction provide करा जाईची एते कि जिंसा क्लियर ना किछि डाउट अछि क्लियर armed forces हैला आपनकर paramilitary units हैला police forces हैला ए माने सब आपनकर ensure होउचंती and proper discharge होउचंती from their duty and discipline according to article 33 clear next चलो मते कहि दियंतु कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट द चिलिका लेक आसा चिलिका लेक विषय टिके फॉलोइंग स्टेटमेंट टिके देखि दियो कोटा आपनकर भूल बाल होची टिके आराम से आपण माने एलिमिनेट कर देबे आसा फर्स्ट कहिछि इट इज अ लागून विथ ब्रैकिश वाटर ठीक अछि पचाछि कोन व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबाउट करेक्ट कोटा करेक्ट ये त आपनकर ठीक ही अछि इट हैज बीन डिक्लेयर्ड अ बर्ड सेंचुरी बाय गवर्नमेंट इन 1987 ये भी त आपनकर ठीक अछि ताहाले हम कोन करि परिबा ना नाला सॉरी नाला बन गोछ आपनकर कोन नळपण बर्ड सेंचुरी त हमें बोथ ऑप्शन को सॉरी सी करो बोथ 1 and 2 को रिलेट करे दबा की बोथ 1 and 2 आपनकर राइट हे गला एठी बोथ 1 and 2 चलो मते कोंतु व्हाट इज बास्क्यूल ब्रिज दैट वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ बास्क्यूल ब्रिज कोन करे एबे एबे तमरो न्यूज़ रे देखा जायछि बास्क्यूल ब्रिज कहिलो मते या माने कोन मान सेई एकाम को एकाम स्नेहासीस नेहासीस तमे एते जल्दी केमते क्लास को आसिलो आसा बास्क्यूल ब्रिज कहले कोन हबो ए ब्रिज सपोर्टेड बाय केबल्स हैंगिंग फ्रॉम टावर्स एटा आपनकर हबो की एटा को हम को ब्रिज कहबा एको हम केबल ब्रिज कहबा एको हम को ब्रिज कहबा केबल ले हैंग हेइसे ता माने केबल ब्रिज ओके ए ब्रिज दैट कैन बी रेस्ड टू अलाउ शिप्स टू पास अंडरनेथ कोन आपण माने देखिथिबे छोट छोट डंगा उडा माने गोटे ब्रिज थिबो YouTube रे बहुत वायरल आसे से शॉर्ट्स उडा माने तळे डंगा पसी जीवो से जो सेलर जे थिबो से पूरा एमते ब्रिज तळे पूरा आसी की गोटे बाडी धर की ऊपर पळे आसीबो डेंगी पूर्ण धरे से पटे ब्रिज रे डेंगी बसियो पैसेंजर तांकर आराम से बसिथिबे नई की जिबे ये बाबू उठी की जंप करी के ब्रिज रे जिबे देखिछ ना वायरल हुए बहुत सारा वीडियोस उडा हो ना तो सेटा एक्चुअली कहिनी सेठी सेटा फक्ति मजाक रे कहि तले बड़ बड़ ब्रिज अछि ता तळे आपनकर सीट मानकर पास हेबा पई देइथिबो स्पेस सेटा को हम कहिबा दैट इज द को ब्रिज ना बास्क्यूल ब्रिज हैला क्लियर हां चलो नेक्स्ट मते को द यूनियन गवर्नमेंट अप्रूव्ड करिछि 17.54 करोड़ प्रोजेक्ट टू रिनोवेट द बास्क्यूल ब्रिज एट श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कोडी कोलकाता दैट इज द बास्क्यूल ब्रिज इज अ मूवेबल ब्रिज दैट लीव्स अपवर्ड टू अलाउ ships and boats to pass and आपनकर कवर करूची etc okay next मते कोंतु river tail is a tributary of which of the following rivers quick पूरी कमेंट देखो कोन चलची त मानकर अच्छा हम स्टार्टिंग रो अपन इग्नोर करछन इग्नोर काई करबे त मान को जानि परनी हां आंसर दियो मते कोन होची ना river tail is a tributary of which of the following rivers कोन हबो जल्दी 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 रिवर तेल कहार आपनकर बाहुडा रिवर आपनकर गोटे स्मॉल आ इंडिपेंडेंट इज फ्लोइंग रिवर आपन मान जानि सथि कोउठ आपनकर ओरिजिन हेची मते के कहबो आपनकर ए जो बाहुडा रिवर ओरिजिन कोउठ हेची कुआ मते को डिस्ट्रिक्ट टू ये आपनकर रामगिरी हिल रो ओरिजिन हेची दिस इज एन इंडिपेंडेंट एंड स्मॉल रिवर ए जो रामगिरी कहूची एटा आपनकर को डिस्ट्रिक्ट टू ओरिजिन हेची के मते कहबो बाहुडा रामगिरी हिल गजपति रु आपनकर ओरिजिन हेची हियर राइट आंसर हैला महानदी वंशधारा ब्राह्मणी विषय ऑलरेडी आपण माने जानि सथि एटा को आपण माने गजपति रे लिखि दियंतु कहिथिले आपण मानकू गजपति कोन करंती रथ यात्रा रे बाहुडा रे कोन छेड़ा पहरा करबा को आसंती नेक्स्ट चलो मते कोंतु सिमिलपाल नेशनल पार्क इज फेमस फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड एनिमल सिमिलपाल नेशनल पार्क आपनकर फेमस कोथि पई मते की कहबो कोथि पई आपनकर ये फेमस क्विक कोथि पई ना टाइगर एशियन एलिफेंट एंड गौर पाई कारण एलिफेंट संबर एंड हाइएना हमर नाही स्लॉथ बियर नाही आपनकर हाइएना एठी नाही बाकी बिसन्स नाही
तो कोडा अछि ना एशियन एलिफेंट गौर एंड टाइगर सहित ही हमें रिलेट करै परिबा वन एंड ओनली ऑप्शन दैट कैन सर्टिफाई द क्वेश्चन स्टेटमेंट क्लियर नेक्स्ट चलो सो राइट आंसर आपन कर हे गला लियोपार्ड समबर डियर वाइल्ड बियर जायंट स्क्वायरल्स कॉमन नंबर सब आपन कर नेक्स्ट मते कहू व्हिच टाइप sorry which temple in Odisha was called as white pagoda by the Europeans aso 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 level la question asiala level la question asiala oh my dear godhas and godhis please give me the answer को कौन कहउचंदी काहा को कहउचे जल्दी अच्छा मते कहिलो ये त आपण जानि देले व्हाइट पगोडा कहिले आपनकर जगन्नाथ टेंपल ब्लैक पगोडा कहिले कोणा पीस पगोडा कहिले धौली अपार्ट फ्रॉम दिस मते कहले राजा रानी टेंपल आपनकर को सेंचुरी रे तयारी हेतिला क्विक राजा रानी टेंपल आपनकर कोठी ना भुवनेश्वर रे प्रेजेंट अछि ओल्ड टाउन रे ये आपनकर को सेंचुरी रे तयारी हेतिला किए मते कहिबो 11th सेंचुरी रे 19th सेंचुरी रे किए से लिखिथिले रे अच्छा डी नेक्स्ट मते 90 देखाला दैट इज 11th सेंचुरी आपनकर तयारी हेतिला ओके हुमा टेंपल आपनकर कोठी प्रेजेंट हुमा टेंपल कोठी संबलपुर केबे हेतिला ये आपनकर 17th सेंचुरी रे तयारी हेछि हैला चलो so Jagannath temple in Puri built with white stone was called white pagoda by European sailors while the Konark temple आपण मान जानछन black pagoda Jagannath temple लोकनि त पुरी बाकी सब आपण मान जानछन जय जगन्नाथ चलो नेक्स्ट हां मते कोन फेमस परशुरामेश्वर टेंपल इज सिचुएटेड इन व्हिच सिटी ऑफ ओडिशा परशुरामेश्वर टेंपल आपनकर कोठी प्रेजेंट किए मते कहइबो जल्दी परशुरामेश्वर टेंपल 7th सेंचुरी रे आपनकर तयारी हेछि को डायनास्टी आपनकर तयारी करिसंती परशुरामेश्वर टेंपल आपनकर शैलोद्भव डायनास्टी तयारी करिसंती शैलोद्भव डायनास्टी तयारी करिसंती अच्छा मते कहलो शैलोद्भव डायनास्टी कर उत्पत्ति कोठु हेछि बोली बिलीव अछि शैलोद्भव डायनास्टी तांकर उत्पत्ति कोठु हेछि बोली बिलीव अछि क्विक मन रखंतु क्वेश्चन आसी जिबा आपनकर शिलारू उद्भव हेचंदी सेथि लागि तांकर ना हेछि कोन शिलारू उद्भव सेथि लागि तांकर ना हेछि शैलोद्भव हैला हां दैट इज अ बिलीफ नॉट लाइक श्योर देयर इज अ मिथ हे पारेबी हैला चलो सो यार आंसर आपनकर कोठी ना भुवनेश्वर रे शैलोद्भव डायनास्टी तयारी करछंदी आपनकर लॉर्ड शिव टेंपल दैट इज कोन परशुरामेश्वर टेंपल so the famous Parsurameshwar temple located in the Bhubaneswar capital city of Odisha the ancient Hindu temple Kalinga style architecture भगवान शिवंकर एठी पूजा हुए नेक्स्ट मते कोन which of the following is a limestone cave in Odisha Odisha रा limestone cave कहउची माने आपण माने वन एंड ओनली कोठी मौसुमी घर पाखो को रिलेट करबो कोह ताले कोठी अछि मौसुमी अच्छा क्लास रे कहि देला हाट फाट उडा फोपाडी न पर्यंत कोठी अछि जल्दी गुप्तेश्वर कोरापुट रे हैला कोरापुट रे आपनकर अछि गुप्तेश्वर लॉर्ड शिव टेंपल बोली आपण जानते खंडगिरी उदयगिरी आपण जानि छथि चलो नेक्स्ट मते कोंतु फाइंड द प्लेस बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन फर्निश्ड बिलो कोन अछि मते रे कहिलो एटा उडे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आसा टिक आंसर दियो कोन हबो हैला कहिछि दिस प्लेस इज फॉर्मली नोन फॉर डायमंड माइन इट इज सिचुएटेड नियर हैदराबाद इट इज द कैपिटल ऑफ कुतुब शाही सुल्तान्स सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो ए सबुटा को देखि के आपण मानु कोन लागुची आसिला गोटे गोटे एलिमिनेट करि करि जिबा कोन आंसर दोछ देखिबा ए समस्तिंगर आंसर ए समस्तिंगर ए हैदराबाद माने आपनकर कुतुब शाही कैपिटल कहिछि ता माने आपण माने गोलकोंडा फोर्ट मारिबे ऑब्वियसली हो ना नहीं मते कोंतु अरे हो ना नहीं बाकी आपनकर जो फोर्ट स्टेट गॉड्स अछि ये आपनकर कोठी कहले ये आपनकर तमिलनाडु रिप्रेजेंट ये आपनकर तमिलनाडु रे बेकाल फोर्ट आपनकर कोठी अछि के मते कहि परिबो बेकाल फोर्ट कोठी अछि बेकाल आपनकर केरला रे आपनकर प्रेजेंट हैला चल नेक्स्ट तो मते कहि दियंतु हु वाज द फर्स्ट म्यूजिशियन एवर टू बी अवार्डेड द भारत रत्न इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर तो फर्स्ट टाइम पे को म्यूजिशियन पाइथिले भारत रत्न मते किए कहि परिबो जल्दी बापा सारा हो आंसर दियो काहेंते होउछ सब आंसर दियो
ऑप्शन वेरी गुड एमएस शुभलक्ष्मी कौन हम फास्ट म्यूजिशियन जे रिसीव करथिले भारत रत्न कि आपणकर कौन सब आंसर दउथलो किए दउथले माध्या भाई कुआडे गले माध्या भाई किए अछंदी माधव को डाकुछ कि माध्या भाई अरे काई एमदी होउछ एमती काई होउछ मौसुमी माड़ खाइबो हां चलो सो kinetic vocalist ms Subhalakshmi was the first musician to be awarded the Bharat Ratna India's highest civilian honor kebe 1998 रे ये सब जन्म होइतला तमे कहलो in India separation of judiciary from the executive is enjoined by जुडिशियरी आपणकर सेपरेट हेची काटू ना एग्जीक्यूटिव टू ताले जो जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव सेपरेशन हेची आपणकर केबे हेची माने काहार अंडर रे हेची दिस इज अ डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अंडर रे आपणकर हेची प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आपणकर गारंटी प्रोवाइड करूची और दिस इज अ स्टेटमेंट हमें कहि परिबा आउटलाइन करूची गाइडेंस करूची आपणकर कहा कोना प्रिंसिपल्स एंड द कोर वैल्यूज एंड द फिलोसॉफी ए मन को ने हैला The separation of the judiciary from the executive is mandated by Article 50, located in the Part 4 DPSP. Clear? Next question को. और देखो, which sector has the maximum weight in the industrial production index? कोटा हबो कोइला? को sector सयो जिबा? काई एमती होउछ? आसो, अरे तातेंडा आजि क्लास रे. हो, आंसर दियो. कोन कहउछ? Which sector को सेक्टर हबो ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरिंग हबो देखि त माने कोन आंसर देइछो ए बी सी डी सब तो दोजो कोडा दोना कोडा त माने आसो सो द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन is a composite indicator that measures the growth rate of industry groups in India. It is classified into three broad sectors with the following approximate कोन manufacturing highest होउची then mining then आपनकर electricity मन रहिबो next मते कोन आइंस्टाइन वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर आइंस्टाइन को अवार्ड मिलला नोबेल प्राइज जेंति कि तम मानू सब मिलिबो क्लास रे इनडिसिप्लिन हेबार नोबेल प्राइज व्यस्त कोनी एंड ऑफ 2026 आई विल नॉमिनेट योर नेम मते कोंतु आइंस्टाइन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर कोथि पई पाइछंती जल्दी कथस्थल थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट रिलेटिविटी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी होची आइंस्टाइन कर ग्राउंड वर्किंग कॉस्मिक रे ऊपर कॉस्मिक फेस ऊपर मोर्क ऊपर किंतु ता पई से पाई नांदी माने मन इच्छा सब तो दे आपण ऑप्शन देबी एमिति आपण जोटा गालिलियो बाहर कटले सेडा दिथांदी की ऑब्वियसली आइंस्टाइन जोटा बाहर कटले सेउडा ही देबी किंतु आइंस्टाइन नोबेल प्राइज पाइसंदी फॉर द थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिसिटी सी Albert Einstein was awarded in 1921 Nobel Prize in the Physics, which he received in 1922, specially for his service to the theoretically physics and especially for the discovery of the law of photoelectric effect. While he is globally famous for his work on relativity ପାଇଁ ସେ famous ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ photoelectric effect ପାଇଁ Nobel Prize ପାଇଛନ୍ତି ବୁଝିଲ my dear Gadhas and Gadhis ଆସ in which of the following states of India is the folk music mando popular कौन हबो जल्दी Anto, very good evening. जल्दी जल्दी आंसर दियो कौन कहूची मांडो इज द फोक डांस कौन कहूछ मांडो को तो माने मांडो कथा मने पडुथो मु बुझी पारुची आई कैन फील योर फीलिंग्स आसो आसो राइट आंसर कौन हबो मांडो हम जानी छी स्नेहासीस देखिलो मु कहू तमे लिखिलनी थॉट मैच करूची आसो कौन होची राइट आंसर कौन हबो दैट इज गोवा मांडो कहले कोठी की जीवो गोवा को जीवो वेरी गुड ताहाले उत्तर प्रदेश कहले कोठी की जीवो उत्तर प्रदेश कहली ठुमरी हैला ठुमरी आपनकर क्लासिकल जनरल सामे रिलेट करै पारि म्यूजिक सब so folk music mando is popular in the state of Goa. It is a traditional musical dance form that developed among the Goan Catholics in the 19th through 10th century 20th century भितरे डेवलप हेतिला मते कोंतु अच्छा अगेन कहूची ओपीएससी एसओ पई जदी बैच नेबा को चाहउचंती विथ थ्योरी एंड आपनकर एमसीक्यूज क्लासेस प्रोवाइडेड 1999 आपण माने जॉइन करि परिबे अनुशासन बैच जूनियर असिस्टेंट पई पीओली 1199 एंड पुलिस एसआई पई आपण माने 399 देकी जॉइन करि परिबे बैच 8280532825 को जॉइन करंतु एल्स आपण माने मते कांटेक्ट करि परिबे फॉर दिस नंबर 9124730510 चलो एंड मो कोड ओनली यूज करिवे SPG10 SPG10 जदी यूज करूछंती एक्स्ट्रा 10% रो डिस्काउंट कोडे आपण माने पाइबे हेलो नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन्स द लाउडनेस और सॉफ्टनेस ऑफ द साउंड कहा को हमें रिलेट करेबा क्विक
बांटो कौन जानी पारलनी आज जानी हो आस राका कौन हेची के जानी से आज क्लास आरंभ रु शेष जाए से चंद्रमुखी हे चलची कौन हे से छुआ आशा को व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कोटा को हमें साउंड कहूचे माने व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस द लाउडनेस ऑफ द सॉफ्टनेस ऑफ द साउंड ता माने हम रिलेट करबा का सहित ऑब्वियसली एम्पलीट्यूड कहबा ऑसिलेशन काई कहबानी कारण ऑसिलेशन आपण माने रिपीटेटिवली बैक टू बैक हमें कहि परिबा बैक एंड फोर्थ हमें कहि परिबा मूवमेंट ऑफ द वेव रा मूवमेंट को जते बेले वेव आपनकर कोन जाउची ना पुनी आगु को जाउची पुनी ढेउ पछु को आसुची ताको हमें कहूचे दैट इज द ऑसिलेशन ओके दैट इज द ऑसिलेशन और हमें तार मूवमेंट को वेव को ओवर टाइम जति हमें रिकॉर्ड करूचे मेकैनिज्म ऑफ क्रिएटिंग एनी साउंड वेव जति हमें कहूचे ताको हमें कहूचे दैट इज द ऑसिलेशन हैला नेक्स्ट चलंतु so the amplitude of a sound wave determines its loudness or softness amplitude is the maximum displacement of particular कोन होची ना आपनकर crest and top एको हमें टोटल टाको गोटे कंप्लीट crest and top हे गले ए टोटल टाको हमें कहूचे गोटे amplitude हैला नेक्स्ट चलो so मते कोन who among the following were moderates कोन होची moderates को हमें रिलेट करेबा ठीक आसिले आंसर देलो हो को मते कौन हबा राइट आंसर फाइल कोडा हबा राइट आंसर व्हिच अमंग द फॉलोइंग वेयर द मॉडरेट्स एमिति कोन देछि व्हिच अमंग द फॉलोइंग वेयर मॉडरेट्स अच्छा समस्तिंकर ना अच्छा 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 छटा जाक ना दे देछि समस्तिंकर को काउंट करिया को पड़िबो की आपनकर हेबे ना की समस्त लागुसंदी जीके ओखले त आपनकर मॉडरेटर थिले ना की आपनकर ये भी तो फिरोज शाह मेहता ये भी तो मॉडरेटर थिले बीजी बालगंगाधर तिलक नथिले दादा भाई नारोजी थिले एमजी रानाडे थिले विपिन चंद्र पाल नथिले दीटा कटि गले तो आउट कटुछन की ना ये कोठे अछंदी ऑप्शन डी यस बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स द लीडर्स नोन फॉर द मॉडरेटर तो माने कोन देथिले रे गदस्थल डीडी हां वेरी गुड चलो सो गोपाल कृष्ण गोखले आपनकर थिले मॉडरेटर दादा भाई नारोजी मॉडरेटर आपनकर मेहता मॉडरेटर रानाडे किंतु मॉडरेटर एंड एट अपन दी जण थिले विपिन चंद्र पाल एंड बालगंगाधर तिलक के माने थिले कोन ना एक्सट्रीमिस्ट हैला नेक्स्ट मते कोंदु हु इज द पोएट ऑफ फेमस सॉन्ग वंदे उत्कल जननी को कोन हाड होची के तमानकर राती तारे आसो मते को जल्दी को वंदे उत्कल जननी के लिखितिले अरे फकीर मोहन सेनापति केमती हेबे रे कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र आपनकर लिखितिले वंदे उत्कल जननी हां तो कोन लिखितिले वंदे उत्कल जननी एंड आपनकर मैग्नी माने फर्स्ट एंथेम गा देथला केबे 1912 रे हैला चलो नेक्स्ट वंदे उत्कल जननी इज द स्टेट एंथेम ऑफ ओडिशा इंडिया एंड इट वाज रिटन बाय द रिनाउंड ओडिया पोएट लक्ष्मीकांत महापात्र इन 1912 रे लेखा जायतिला हु वाज द फर्स्ट लेडी चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा आसंतु केबे को मसिया रे हेतिले लेडी चीफ मिनिस्टर त आपण माने जानिले को मसिया रे आपनकर हेतिले फर्स्ट टेन्योर तांकर केबे हेतिला जल्दी हैला नेक्स्ट चला मते कोंतु हु बिकेम द फर्स्ट गवर्नर ऑफ ओडिशा प्रोविंस किए थिले क्विक फर्स्ट गवर्नर ऑफ ओडिशा प्रोविंस किए थिले जल्दी जल्दी आंसर दे दियो किए थिले जॉन ऑस्टिन हबाक थिले हैला नेक्स्ट मते कोन सर जॉन ऑस्टिन हबाक सर्व एज द फर्स्ट गवर्नर ओडिशा प्रोविंस 1 अप्रैल 1936 से तेबले हम ओडिशा सेपरेट प्रोविंस हैला से तेबले ठीक अछि नेक्स्ट मते कोंतु द रिवर वंशधारा ओरिजिनेट्स फ्रॉम हिली रीजन्स ऑफ रिवर वंशधारा आपनकर कोठ ओरिजिन हेची ओय हां कि माधव मु तो जान नथली तमे कहिला परे जानि आसो कोंतु द रिवर वंशधारा ओरिजिनेट्स फ्रॉम द हिली रीजन्स ऑफ कोठू कला हांडी कोठू कलाहांडी कोची कलाहांडी रु थुआमूला रामपुर हिल को हिल रु थुआमूला रामपुर हिल फ्लो करछि आंध्र प्रदेश को हैला द वंशधारा रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द हिली रीजन्स नियर द लांजीगढ़ इन द कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा जदि पचारा गला कोठू थुआमूला हिल हैला नेक्स्ट a substance that stimulates the production and of antibodies when introduced into a living organism is known as अच्छा जते बेले हम गोटे सब्सटेंस को बॉडी भीतर को दोउचे से आपनकर एंटीबॉडीज डेवलप करूची स्टिमुलेट करूची ताहाले ताको हमें काहा को कहइबा कहला जल्दी आंसर देला देखी ताको हमें कोन एंटीबॉडी सहित आपन माने सब बेले एंटीजेन को पढिथिबे हना नै मते कोंदु
एंटीबॉडी सहित एंटीजेन को आपण माने पढिथिबे जेतेबेले हमकु कहूची व्हाट इज द कार्सिनोजेन ना कार्सिनोजेन आपण गोटे केमिकल फिजिकल या फिर बायोलॉजिकल एजेंट हमें कहि परियो जे कि डैमेज करे जते जेनेटिक मटेरियल आपनकर बॉडी रे अछि डायरेक्टली प्रमोट करे डेवलपमेंट ऑफ द कैंसर बॉडी भितरे जदि आपनकर कैंसर डेवलप होची देन आपण माने जानिथिबे द कार्सिनोजेन इज प्रेजेंट इनसाइड दैट जदि एंड्रोजेन कहूची त एंड्रोजेन को आपण माने रिलेट करे परिबे का सहित जो आपनकर दिस इज अ टाइप ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन ओके जे कि आपनकर टेस्टोस्टेरोन भितरे आपनकर एंड्रोजेन थाए बाकी इस्ट्रोजेन सहित आपण माने जानछंती इस्ट्रोजेन कहले आपण माने कोन कहउसंती द स्टेरॉइड हार्मोन जोडा कि रेस्पोंड माने कोड एंड्रोजेन कहले आपण माने मेल रे जो स्टेरॉइड हार्मोन थाए ताको हम रिलेट करछे इस्ट्रोजेन कहले फीमेल रे जो स्टेरॉइड हार्मोन थाए एटा आपनकर रिलेट करेबो क्लियर चलो नेक्स्ट so substance that stimulate the production of antibodies and introduce corruption into a living organisms is called the antigen antigen are foreign substance that enter the body such as the bacteria hella virus hella fungi hella allergens hella या फिर toxins hella next मते कोंतु darwin finches refer to a group of darwin finches को हमें कहउछु that is refer to a group of what quick answer आंसर दिया मते को डार्विन फिंचेस रेफर्स टू डार्विन फिंचेस को ना आसिले आपण माने रिलेट करबे का सहित ता बर्ड्स को सहित काहेंगी बी केमदी हैला अच्छा बी मारुचो बी पुनी जदी पार्टी करूचो त माने लिजर्ड कहूचो जने पार्टी करूचो त माने कहतो मैं बी फॉर बैड हमें कहउला आपण बी टा को ऑप्शन वाला बी नै देछंती ना कि गजब त माने कर ट्रिक बुझिला कथस्थल आस डार्विन स्टडी करसंती ऑब्वियसली फिश माने को ऊपर बट फिश रो आपन को जो गिल न थाए गिल माने आपन को वर्टिब्रेट माने कर गिल बियरिंग कैपेसिटी ता ऊपर आपन को स्टडी करथिले हैला सो नेक्स्ट आंसर दियो सो डार्विन आपन को फिंचेस आर ए ग्रुप ऑफ बर्ड्स दे आर आल्सो नोन एज द कोन ना आपन को गैलापागोस फिंचेस तांको ऊपर आपन को चार्ल्स डार्विन स्टडी करथिले नेक्स्ट माने कोंतु बोटानिकल नेम ऑफ टोमेटो आस क्वेश्चन इंपोर्टेंट टमाटो रो बोटानिकल नेम दिए कहले कोन हबो किए भूल कहला धर ताकू अंटो आंसर दियो मते को कोन हबो राइट आंसर बोटानिकल नेम ऑफ टमाटो कोन हबो सोलानम लाइकोपर्सिकम कोन हबो सोलानम लाइकोपर्सिकम को हमें रिलेट करेइबा दैट इज द बोटानिकल नेम हैला ठीक अछि अच्छा मते कहले ए जो अछि एलियम सेप्टा ये गोटे कहार बोटानिकल नेम आसा इंटरेस्टिंग को दैट इज द एलियम सेप्टा ये आपनकर गोटे कहार गोटे वेजिटेबल्स रो बोटानिकल नेम कहार कहलो ये आपनकर ओनियन रो बोटानिकल नेम कार ओनियन रो बोटानिकल नेम होची आ एटा जो कहना सोलानम टुबोरोसम एटा हो जे आपनकर पोटैटो टुबोरोसम पोटैटो रे आपनकर टुबोरोकुलोसिस डिजीज हुए पोटैटो लीव्स आपन को देखि जे बंदी बम लंप लंप हे की बाहर जाय ना टुबोरोकुलोसिस ताले टुबोरोसम सहित पोटैटो को रिलेट करेबे ठीक अछि सारूर एग्जैक्टली मने पडुनी कोन जानिथिले बहुत सारा जेतु बॉटनी स्टूडेंट किंतु मने नै एटा आपनकर साकारम रु साकारम त माने आपन माने सुगर केन सहित रिलेट करेबे हैला हां सारू बिलीव तातेंता होवास तो बोटानिकल नेम सोलानम ता आपनकर लाइकोपर्सिकम फैमिली रोचे सोलानेसे फैमिली रो क्रोमोसोमल नंबर 2n24 आपन माने जानि परिबे छडम मते कोन द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एग टू द एडल्ट स्टेज इज नोन एज गोटे डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म गोटे एग ग्रुप पूरा एडल्ट पर्यंत ताको हमें कोन कहउचे जल्दी नेहासिस नो नो हैला आसो ताको हमें एम्ब्रियोलॉजी कहउचे कोन कहउचे एम्ब्रियोलॉजी ये सैंडो ताको हमें कोन कहबा ना एम्ब्रियोलॉजी आसो याकू पुंडी दे देखि देबा ए जो जेनेटिक्स कहउची व्हाट डू यू मीन बाय द जेनेटिक्स कहि परिबा कि द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जे डेडिकेटेडली कहा ऊपर स्टडी करची ना ओवर द हेरेडिटी ओवर द जीन्स और हाउ द डाइवर्स
साइट्स आपनकर रहिला डाइवर्स ट्रेड्स आपनकर रहउची से माने केमिति पास करूछंदी फ्रॉम डिफरेंट जनरेशन टू डिफरेंट जनरेशन फ्रॉम योर एंसेस्टर्स टू द ऑफस्प्रिंग ताको हमें कहि परिबा दैट इज द जेनेटिक जते बेले सेल बायोलॉजी कहउची माने स्टडी ऑफ द सेल तार स्ट्रक्चर तार फिजियो आपनकर कोन फिजियोग्राफिकल प्रॉपर्टीज तार लाइफ साइकिल्स ता पर हेले आपनकर सेल बायोलॉजी एंड मते के कहबा हिस्टोलॉजी मीन्स वेरी गुड जते बेले स्टडी ऑफ the fine structure of the biological tissues आपनकर कहबो cell is different tissue is different okay जते बेले tissues कहूची और तार organ they are using as the advanced microscopy एटा study of tissue हैला ठीक अछि ओके चलो नेक्स्ट मते कोन सो एम्ब्रियोलॉजी स्पेसिफिकली फोकसेस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो नेक्स्ट मते कहि दियंतु व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज एसोसिएटेड विथ द टीथ डिसऑर्डर माने देखि कुह तो माने के दांत या भीतर केते नंबर ए बी सी डी एफ जी एच आई मते कहलो सब लिखि चलो बी सी डी एफ जी एच आई सब लिखि दियो आ काइंडली एते साधु देखाई कि को माने ई बोली लिखिबो नाही को माने ई लिखिबोनी एलिमिनेट करो याकू बाकी कोडा कार दिए लिखि चलो आसो कोन हबो कुह कौन हबो कुह जल्दी yes that is the fluorine हैला fluorine हबो so fluorine is the element associated with the teeth disorder too much fluorine in drinking water can cause the dental fluorosis a condition that causes the teeth to become discolored and mottled and jodi कहूची dental fluorosis कोन ना this condition is also known as the mottled enamel it is a common disorder that affects the appearance of tooth enamel in the children okay next mother कहंतु which of the following part of human skeleton forms the helmet for the protection of human brain human skeleton जते बेले फर्स्ट टाइम आपनकर फॉर्म हुए गोटे छोटो बेले देखिथिबे छोटो पिलांकर हेड बोन टा बहुत ही एक्सेस सॉफ्ट थाए एंड आपण माने मार्क करथिबे एठी दुख दुख हेगी थाए जते बेले छोटो पिला माने साई पडिसा का घर को जानती तांको मुंडो को टिके माने तेल दे दियंती कोन गोटे माने व्हाटएवर द लॉजिक बिहाइंड दैट बट स्टिल आपनकर गोटे दिया जाय दुख दुख आपनकर थाए लेटर ऑन जाई कि आपनकर दांत फीलिंग रे माधव मने पडुनी सॉरी मने पडुनी समथिंग कार्बोनेट कोन ओटे दिया जाय कहिबे परे हैला सास तो एटा आपन को कहि कि जब फर्स्ट टाइम आपनकर इन्फांट रु जते बेला हमें मैच्योर कंडीशन को जाउ छ और आफ्टर हमें कहि परिबा 1 ईयर 2 ईयर भितरे आपनकर ओटे हेड बोन टा ओटे स्ट्रांग बोन ने कन्वर्ट हे जाय ताको आपनकर कोन कहै जाय जानछन ताको हमर क्रैनियम बोली कहै जाय कोन कहै जाय ना दिस इज अ स्पेशलाइज्ड रिजिड बोनी केस हमें कहि परिबा बोनी स्ट्रक्चर कहि परिबा of the skull जे कि आपनकर एनक्लोज हुए कुशन लाइक आपनकर स्टार्टिंग रे कुशन शेप रो थाए जेटा कि आपनकर देखिथिबे सपोज मुंडडा आपन माने सब बेले मुंड देके एमते सोउचंदी शेप केते बेले चेंज हेबार देखुचंदी काहे कि तारटा ऊपर गोटे हेलमेट टाइप रा हमर स्ट्रक्चर रहिची द शेप ऑफ द हेड इज सो मच राउंड लाइक द हेलमेट ओके हां चलो नेक्स्ट मते कोन तू यार क्रैनियम हां नेक्स्ट मते कोन सो हियर इज योर क्रैनियम बोली हमें टोटल शेप तार ना हो जे क्रैनियम next mate कहंतु which of the following is the structural and functional unit of the human nervous system कोन हबो राइट आंसर मते यार कहंतु जल्दी मैम इकोनॉमी बजेट रो क्वेश्चन गोटे गोटे आनिबे हां विश्व बाबू डेफिनेटली आनिबा हां को व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन रो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहिला हमें कोन बुझुचे क्विक कोन बुझुचे दैट इज द न्यूरन ओके देखो so a neuron is a nerve cell that receives or process or transmit करूची information through the electrical signals making it the fundamental unit of the nervous system while the brain is a major part of the nervous system it is composed of many neurons and it is not considered the single structural unit axon कहले an axon is a part of the neuron specifically the long fiber that transmits the electrical impulses away from the cell body if the question is asking about what is the dendron is
then आपण माने कहि परिबे a dendron or a dendrite is another part of the neuron that receives the signal from other neurons. dendrite रो काम कोन माने पूरा सरू सरू आपनकर ट्री लाइक शेप रो ब्रांचेस ट्री रो ब्रांचेस सेंति थाए हेड रो आपनकर मेन न्यूरॉन्स रो आपनकर डेंड्राइट माने बाहर की जाई थान जोटा कि सेंसेशन आपनकर क्रिएट करे. ओके नेक्स्ट मते कोंतु at a very high altitude the red blood capsules in the human body will जते बेले गोटे हाई अल्टीट्यूड को आपण माने जाउ छंती. ओके तो सेते बेले आपनकर बॉडी रे जो आरबीसी प्रेजेंट आपनकर रहउची और आपनकर रेड ब्लड कर्पोसिल्स प्रेजेंट रहउचंती से माने कोन कहउचंती हाउ दे विल माने तांकर डेवलपमेंट होउची इंक्रीज डिक्रीज कोन होउची माने रखंतु दे ऑलवेज इंक्रीज इन द नंबर व्हेन वी विल गो टू द हाई अल्टीट्यूड. ओके ओके डिक्रीज हेबे नाही डिक्रीज आपनकर कोठी हेबे ना सेल्युलर ट्रेट टिपिकल ऑफ द कोन ना आपनकर एनीमिया केसेस रे डिक्रीज हे जा. ओके नेक्स्ट देखो so at high altitude the number of red blood RBCs human body increase होंती. This is because the body respond to the low oxygen level by producing more RBCs to carry more oxygen to the body's cells. Okay next मते कहि दियंतु ना Newton's first law of motion gives the concept of Newton's first law of motion कहले आपण माने कोन बुझुचंदी क्विकली मते कहि दियंतु कोन कहउची फास्ट लॉ आपन को कोन कहउची ना जे पर्यंत कोनोसी भी बाह्य फोर्स आपन को ऊपर अप्लाई हेई नाही हने नै मते कहंतु से तारा करंट स्टेट को चेंज हबो नाही. दैट मींस unless an applied force unless an external force is not applied to the given body the rest of uniform motion or the uniform like whatever the state the current state or the rest of uniform hela rest of motion hela that will not change that will remain in a straight line. तो एटा आपनकर inertia को बुझौछि कोन बुझौछि ना this is inertia हला. नेक्स्ट मते कोंतु ना the reason for a swimming pool to appear less deep than the actual depth आपण माने स्विमिंग पूल को जल देखुथिबे दूररु भाबुथिबे अरे भाई रे बहुत ही डेप्थ हेतिबो गला माने डुबी जिबा हने नै किंतु माने सॉरी डुबी जिबा नै माने उल्टाडा हम कहि माने आपण माने देखिले लागे कि स्विमिंग पूल रे बहुत ही कम पानी थाए बट जते बेले आपण माने भीतर को जांदी त सिचुएशन आसे आपण माने बुडी की टपकिला होडा सिचुएशन बट एटा एक्चुअली रे कोथि पाए देयर इज अ रीजन बिहाइंड दैट एक्चुअली रे को रीजन की मते कहि परिबो व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड दैट. So obviously that is the refraction. किए कहि परिबो yes सीमा that is the refraction. काहेकि कारण आमे जानछे refraction माने कोन that is the bending of light as it passes from the denser medium into the rarer medium. The air आपनकर थाए then आमे कहि परिबा we shift the apparent position of the pool flow upward that is the refraction सहित आमे relate करेबा. Clear चला next. So swimming pool appears less deep than it actually is due to refraction which is the bending of light as it passes from water to air. Okay next question answer mate diyo who among the following is the world renowned exponent of the bamboo flute. आंसर दियो कौन हबो राइट आंसर एठी he was none other than the Hari Prasad Chaurasia. So Hari Prasad Chaurasia was born on 1st of July 1938. He is an Indian musician, music director and classical flautist who plays the bansuri in the Hindustani classical tradition. He was born in Prayagraj, Uttar Pradesh. Next mate kontu match the following institutes with their respective founders of British India. Quick कौन हबो राइट आंसर गोटे का एलिमिनेट माने रिलेट करै दियो ऑटोमेटिकली जानि देबे कोन माने कोंतु फास्ट को आसो जानि दबो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बेंगल सर विलियम जोन्स AIV ऑप्शन सी चलो तो द करेक्ट मैचिंग एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बेंगल सर विलियम जोन्स को सहित संस्कृत कॉलेज ऑफ बनारस जोनाथन डंकिन then Fort William College Lord Wellesley Kolkata Madras Warren Hastings.
Who was the Viceroy of India when Mahatma Gandhi started Dandi March on 12th March 1930? कौन हमारा राइट आंसर को कौन हम किए थे लॉर्ड इरविन. So Lord Irwin served as the Viceroy of India from 1926 to 1931. During his tenure, Mahatma Gandhi launched the Salt March, also known as the Dandi March, on 12th March 1930. The Dandi March was a pivotal event in the Indian independence movement, protesting against the British salt monopoly. Okay. Next, I want to identify a water harvesting system found in Jaisalmer. Water harvesting system found in the Jaisalmer. कौन हमारे relate? जल्दी. That is C. Pakka. Sita. कौन ना that is an igneous and eco-friendly runoff farming आपनकर हेतिला rainwater storage layout design हेतिला Paliwal आपनकर कोठी Brahmins of Jaisalmer in 15th century, that is the Khadins. The Khadins are the traditional water harvesting system specially found at the practice in the arid regions of Jaisalmer, Rajasthan. These igneous system involves the converting agricultural field into a rain field. Next one, which of the following options is the most appropriate cause for unemployment in India? Which is the most appropriate of the unemployment in India? सब बेले कहले हमर कोथि पई हबो environment condition सहित unemployment किछ relation নাই. High education system जो अधिक educated हम हेतांते unemployment न थांदा. Lack of labor force over population पई हमर unemployment होछ. Over population पई. Next चलंतु in which year of the following battles did Muhammad of Ghor defeat Jayachandra of the Gadwala dynasty in 1194 AD? कौन हमारा राइट आंसर कहलो? मोहम्मद घोरी को कथा पचरा जायछि. मोहम्मद घोरी को कथा पचरा जायछि. डिफीट हेइथिले आपनकर कहां को द्वारा ना जयचंद्र केबे सॉरी मोहम्मद घोरी डिफीट करथिले जयचंद्र को केबे को जगह रे ना बैटल ऑफ चांदावर. बैटल ऑफ चांदावर. ओके देखो सो मोहम्मद घोरी कहि दियो और मोहम्मद ऑफ घोर कहि परिबो डिफीटेड जयचंद्र ऑफ द कोन ना गधवाला डायनेस्टी इन द बैटल ऑफ चांदावर केबे 1194 एडी रे जमुना नदी पाखरे. The growth form of a plant comprising its size, shape and orientation is known as. जेते बेले कोनो जोटे प्लांट रा में ग्रोथ कथा पहुची ता माने हम रिलेट करे परिबा कहा सहित ना तारा हैबिट को नै तारा habit, that means तारा structural appearance कथा कहूची. growth माने growth तारा structural appearance, तारा growth form and the shape that a plant naturally take, such as a being a tree, being a shrub, being a herb or a climber. Okay, next चलंतु मते कोंतु according to the census of India 2011 the percentage of adolescents population जो माने 10 to 19 years भितरे पचारिछि from the total population is how much? That is 20.9%. keeping in mind always. According to the census of India 2011 the percentage of the adolescents population from the total population is 20.9%. The total population of India is 1.21 billion according to 2011 census. Next mate कहतु who among the following is the hero of the Sanskrit historical poem the Ramacharita written in the Sandhyakar Nandi? Written by कहा द्वारा ना संध्याकर नंदी लेखि चंदी तार हीरो आपनकर की अछंदी के मते कहि परिबो ना रामपाल होचंदी तांकर हीरो के रामपाल. So Rampala was the ruler of the Pala dynasty in Bengal. The Ramacharita is a historical poem written by the Sandhyakar Nandi which praises the deeds of Ramapala. The poem highlights the achievement and valor of Rampala, portraying him as a heroic figure. Rampala's reign marked as a significant period in the history of the Pala dynasty, often considered as the last great ruler of the Pala dynasty. Clear? So again कहूची OPSC ASO ପାଇଁ 1999 ଦେଇକି join କରିପାରିବେ अनुशासन बैच, सहकारी बैच जूनियर असिस्टेंट ପାଇଁ 1199 रे and अग्निपथ बैच आपण माने 399 रे 8805 3285 को कॉल करके क्वेरी सॉल्व करिवे. else mo number 9124730510 को कॉल करि परिबे. only whatsapp available, only whatsapp करि परिबे कोनोसी बैच जॉइन करिया को चाहउछन त देन क्लास रो पीडीएफ पई वेदांग क्लासेस रो टेलीग्राम चैनल को जॉइन करि जानतु so that class रो पीडीएफ पाइछे. ओके
बाकी रहा, thank you so much guys, have a good night, do take care of yourself, but first of all do prioritize your parents. This should be your first priority, no one else in the world. Thank you so much. What express